Okay, so good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Okay, so in the last class we have discussed about the charge densities. Okay, so we have discussed about the surface charge density, line charge density, and the volume charge density. Okay, these discussions we have already done. Now we will discuss about the electric flux density. Now, till now we know that what is electric field intensity. Okay, so electric field intensity is the at a particular point where the electric field is created by a point charge has some force on that particular point. That means there is a charge q and that charge q is having some electric boundary. Okay, so within that boundary any other charge when it enters it will experience a force. So within that boundary any point, at any point it will have some electric field intensity. That means the force experienced by any positive charge when placed at that point. Now flux density means, what is flux? Flux we all know that in magnetism we have studied that flux is represent the magnetic lines of force. Okay, so when we put a bar magnet, then the magnetic field is created from north pole to south pole. Okay, so that magnetic field is represented by magnetic flux. So fluxes are actually creating the magnetic field. So if you, I think you have studied in your basic electrical, the analogy between electric circuit and magnetic circuit. That just like in electric circuit, the driving force was the EMF, electromotive force, or the voltage, which used to push the electrons in the conductor, and the electrons used to flow, and the rate of flow of electrons is electric current. Similarly, in a magnetic field or a magnetic circuit, suppose you are designing an electromagnet, so you take a solenoid, you take a ferromagnetic core, you wind some using the conductor, you give some supply. So the number of turns multiplied by number of the amount of current, that is N into I, will create some magnetic force, that is called the magnetomotive force, which is MMF. So MMF is analogous to EMF in the electric circuit, and this MMF is nothing but an electromagnet. But this MMF is the driving force of the electromagnet which creates the magnetic field, and the fluxes are traveling in the magnetic field. So fluxes are similar to the electric current. The task that electric current does in a electric circuit, the same task the flux does in the magnetic circuit. Okay, but in electric circuit also there is flux. Okay, electric circuit, generally we don't call electric circuit, there is no flux, because it is dynamic. Sorry, I means the statement, I reform it once again. So in electric circuit we deal about dynamic charges, that is not static charges. It is continuously changing with respect to time. The flow of charge with respect to time changes. That is why we get a current. But in stable, suppose you have a point charge, that point is static, charge is static, so there is no current, but that charge will have some electric field. So that electric field, when the charge possesses, okay, so how does it possess? When the charge is there, Q, it is having some electric field. That means there is some electric flux. When magnetic field is there, we have magnetic flux. Electric field, we have electric flux. Electric fluxes come out of the charges in this way, and they come out in this way, and up to the area it spreads out in like this. Okay, so it's called the electric flux. So unlike magnetic flux, electric flux are not always closed loop. That means in magnetic flux, we know that magnetic fluxes are in a form of a closed loop. That means we have a north pole and south pole, and the fluxes originate from north pole and end at south pole. So it is a closed loop structure. Okay, kind of a form. Okay, in between also we have south pole to north pole like this. But in electric charges, in electric flux, the fluxes come out of the charge, but they don't enter the charge again, unlike the magnetic flux. Okay, this is because an isolated magnetic north pole and an isolated magnetic south pole do not exist practically. That means I have discussed this in brief in the last class.
that you cannot isolate a north pole from a south pole, because if you take a bar magnet and if you break the bar magnet into small pieces, every small piece, how tiny it is, it does not depend, but every individual piece will have a pair of poles, north pole and south pole. So you cannot separate north pole from south pole. That means a single monopole does not exist in a magnet, but a single charge can exist. That is why the charges flow from one, the charges have the electric field, and the fluxes originate from the charge. Okay. We generally denote electric flux with psi. So this is a Greek alphabet, we call it psi. We take the measuring unit of psi as the amount of flux emanated from 1 coulomb positive charge. That means the unit of flux is also coulomb. That means if 1 coulomb charge is present in a space, then 1 coulomb charge will have some electric field. So that electric field will be created by the electric flux which is coming out of the charge. So 1 coulomb of charge will have 1 coulomb of electric flux. Okay. We know that number of lines of force emanated from a positive charge body is numerically equal to the charge of the body measured in coulomb. That means the number of lines emanated from the charge body means this is the number of lines that is emanating from the charge body. Emanating means coming out. It is coming out of the charge body, which is flux. So flux equals to the charge. Okay. As a flux is a total lines of force emanated from the charge body, the unit of flux is also taken as coulomb. So if Q is the charge of a body and psi is electric flux, then we write Q equals to psi. Okay. Now this is generally explained by Gauss law, in later we will discuss. Now electric flux density is the amount of, because electric flux density is required to be measured, because as I have told you that in magnetic circuit also the flux is represented by phi. Okay. But generally we deal with the alphabet B, which is called the flux density, flux per area. That means we put a area over here, unit area. The amount of flux which is traveling through that area we calculate, and we differentiate to calculate the flux density. Similarly, we also calculate the electric flux density also, because it is not possible to count the number of field lines which are coming out from the charge. So we cannot count the direct charge, the flux. Okay, because if you know the charge, we know that if the charge is 5 coulomb, then the flux is also 5 coulomb. Okay, but generally what we do, we put a similar object like this of an area. Okay, we put an object and we measure what is the amount of flux entering that object. If that is psi, so we write D equals to psi by A, where D is the electric flux density, very similar to B. B is the magnetic flux density and D is the electric flux density. Okay, so electric flux density is defined as the amount of flux passes through the unit surface area in the space imagined at right angle to the direction of the electric field. That means the area should be placed at right angle to the fluxes. The area should be right angle. That means you cannot put it slanted, in a slanting position. The surface which you are putting, the fluxes should enter that surface perpendicular. Then only you can measure the accurate amount of flux. Otherwise you cannot measure the accurate amount of flux. The expression of the electric field at a point is given by, now we know that electric field intensity, suppose we talk about electric field intensity, that means we have a charge. Now we will relate the equation in this way. Now we have understood that what is D. D is psi by A. Okay. Now how did it come? In this way, suppose imagine the charge over here Q. Okay. Fluxes are coming out. That means it is having a electric field. That means this is the area where the charge is having the range. So at any point you will have
an electric field intensity. Suppose I take a point over here P, point P. The distance of charge from P is R. So what is electric field intensity at this point? It is equals to Q by 4 pi epsilon naught into epsilon R into R square. What is epsilon R? The relative permittivity. Suppose this is not air medium, this is something else. Okay, some different medium is there. Then we will use that relative permittivity. Okay, so now as we know, Q is equals to phi, the psi. So we will write psi in terms of Q. So we will write psi. So in place of Q we write psi by 4 pi epsilon naught by epsilon R square. Now what we will do, we will take these two and put it on the left hand side. Okay, so what we have in the right hand side, psi by 4 pi R square. Now can you tell me what is 4 pi R square in terms of geometry? It is an area of what? Sphere. Okay, so area of a surface area of a sphere. Okay, so that means if Q is a if Q is this charge, this particular charge, so the amount of flux which is coming out, as if there is a sphere. Okay, the sphere area is 4 pi R square. Okay, wait, let me redraw this in this way. Okay, so this is point P over here. So taking this point P, which is at a distance R, so taking this R, we are drawing a circle. We are drawing a sphere rather, like this. So the fluxes are coming out of the sphere. The fluxes are coming out of the sphere in this way, as if the total range of the Q charge, okay, total field is not known to us. We don't know. It can be infinite, or it can be more than the space of this particular screen which you are looking at. It can happen the charge is so huge that the total area bounded by the electric field produced by the charge is more than the screen. Okay, so we cannot define that in this particular two-dimensional screen. So what we do, we take a point P charge, a point P, and imagine that the electric field is at this particular point, and we draw a sphere, and the fluxes are coming out of the sphere because the field is more than the boundary is more than the sphere, so it is coming out, no problem, let it come. So basically this is the sphere. Okay, so the flux is phi, the flux is psi, the flux is psi. So we don't know that what is the total amount of flux. Suppose this is the total. How much? It is everywhere. As I told you, it is greater than the screen. It is going everywhere. Okay, it is going everywhere. So we don't know what is psi. Psi value is huge. So what we do, we take a small portion of psi. Okay, suppose like this small portion of psi, small psi, as if this psi is equals to the total flux. Okay, or you can say this psi is the amount of flux which is passing through this area, 4 pi R square. That means the total flux which is created by this charge Q is psi, but the total flux which is coming out of this sphere is not equals to the total flux, because the total flux will be more compared to the flux coming out of the sphere. Okay, because the range is more and you are taking a small sphere of radius r. Then what is the amount of flux which is passing through the area? That is equals to the flux passing through the area divided by area will give you flux density. That means this flux which is passing through the area is suppose small psi. Okay, not the total psi. Total psi is the total one, but the fluxes which are traveling through this area is small psi. So this is our flux, required flux. Okay,
So required flux divided by the area through which it is passing, it is called the flux density, which is equals to D. Okay, so which means D is nothing but epsilon naught epsilon R E. So which means that the electric field intensity is dependent on flux, or you can say flux density is dependent on the electric field intensity. The flux density is dependent on the electric field intensity. Okay, because the flux is also dependent on the electric field intensity, because flux is equals to D into area. If I write in this way, that flux, which flux, not the total one, only this one which is passing through the area, the flux is equals to D into 4 pi r square. What is D then? D is epsilon naught epsilon R E 4 pi r square. That means the amount of flux which will be created depends on the electric field intensity. If you multiply the electric field intensity with the area in which you want to determine the flux, you will get the flux. If the area is the whole screen, then you will get a bigger flux, because in that case the flux will be greater. Okay, because flux density is same, because see, for this epsilon naught epsilon R E is nothing but the density. So obviously if you multiply flux density with area, you will get flux. So if you multiply flux density with a small area of this sphere, you will get a small flux. If you multiply flux density with a greater area, entire screen, so you will get the capital flux. Okay, understood this? If not, then please tell me before I go to the next slide. हेलो सर. Yes, please. सर ये क्यू को साई के इक्वल कैसे लिख दिया सर, मतलब कैसे आया ये? Q को साइक से इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये चीज हमने पहले जो देखा था ना, कि एक मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है, और Q चार्ज हमेशा सोलो रहता है, सिंगल, it is not in pair. So the fluxes which are coming out of the Q will not enter back. ठीक है, पोल में क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक वो फिर से घुस जाता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. सो नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल में फिर चला जाता है. तो इट इज हैविंग अ क्लोज लूप. बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स विच कम आउट ऑफ द चार्ज, इट लीव्स द चार्ज एंड इट गोज ऑन. वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा एरिया में, पूरा फैल रहा है, ठीक है, पूरा फैल गया, जितना भी बाउंड्री है वो फैल गया. बाउंड्री के अंदर जो भी दूसरा चार्ज अगर आ जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन बाउंड्री के बाद अगर कोई चार्ज आता है तो फिर वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि वो बाउंड्री के बाहर है. तो उसका भी एक लिमिटेशन है ना, जितना चार्ज का कैपेसिटी होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतना उसका बाउंड्री होगा, तो इतना फैलेगा. अब फैल क्या रहा है, फैल रहा है उसका फील्ड, उसका फील्ड मतलब फील्ड बना रहा है. अब फील्ड किसके वजह से बना रहा है, फ्लक्स के वजह से. सो फ्लक्स फैल रहा है, तो कितना फ्लक्स फैलेगा, जितना उसका चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा वही तो फ्लक्स फैलेगा ना. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स. दिस इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, क्लोज लूप है, दोनों पोल्स के क्लोज लूप है, तो इसके लिए इक्वेशन अलग होगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इफ यू हैव अ सिंगल चार्ज and it is creating, it is the fluxes are generating from that particular charge and it is spreading everywhere. So the total flux which is coming out of the charge, it is equal to the charge. ठीक है, जितना भी चार्ज है, जितना चार्ज का यू मेजरिंग कैपेसिटी है, मतलब the amount, the measure, the how the you can measure the charge, it is represented by coulombs. Okay, that is the capacity of the charge. The charge is creating the amount of flux, so it will create the amount of flux within its capacity. Okay, so it is creating the amount of flux which is equal to the charge. जितना उसके पास चार्ज है उतना ही वो फ्लक्स को जनरेट कर रहा है.
That is why the flux which is coming out from the charge body or emanated from the charge body, the flux is equals to the charge itself. Understood? यस सर. ओके तो चार्ज जो होगा, सिंगल चार्ज जितना होगा उतना ही वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. अगर 100 कूलम का चार्ज है तो 100 कूलम ही वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, उससे कम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा. अब अगर एरिया उसका ज़्यादा बड़ा है, अगर 100 कूलम मतलब बहुत बड़ा है, द इज अ ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. Okay, so it is a huge magnitude of charge. Okay, so if it is a huge magnitude of charge, so it will create a huge flux. But I want to know that if I draw a small sphere, then what is the flux in that sphere? That will not be equal to total flux, because total flux तो पूरा एरिया पे है. मान लो कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के रेक्टेंगल में पूरा फ्लक्स है कैपिटल फाई, लेकिन हमने स्मॉल स्पीयर ड्रॉ किया है. उस स्पीयर में जितना भी फ्लक्स है वो है स्मॉल शाई. तो डेंसिटी तो एक ही रहेगा ना. आप अगर यहाँ पे आप लोग एक स्पीयर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी फ्लक्स जा रहा है ना, पास कर रहा है, तो उसमें होगा शाई 1. यहाँ पर एक स्पीयर ड्रॉ किया, उसमें भी कोई कुछ फ्लक्स जा रहा है तो है शाई 2. अलग अलग है टोटल. अगर ऐसा तो क्योंकि ये जो फ्लक्स जा रहा है यूनिफॉर्म है. मान लो कि इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, तो अगर डिवाइड करोगे शाई 1 बाई A1 यू विल गेट D फ्लक्स डेंसिटी. यहाँ पर भी शाई 2 बाई A2 यू विल गेट D, बिकॉज डेंसिटी सेम है हर जगह पे. तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक अगर छोटा सा अगर होता है स्पीयर, तो उसमें अगर फ्लक्स जा रहा है मान लो कि 1 कूलम, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 1 कूलम जा रहा है, तो फिर 100 सेंटीमीटर में 100 कूलम जाएगा, बिकॉज द फ्लक्स डेंसिटी सेम. ओके, सो द टोटल एरिया if it is AT, then the total flux will also be D. It will also be D, which is also equals to the flux divided by the area of the sphere. ठीक है, तो इसलिए छोटा सा स्पीयर ले रहे हैं, उसमें कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमको पता है, वो है छोटा शाई. पूरा का पूरा कैपिटल शाई हमको नहीं पता, क्योंकि हम लोग पूरा एरिया नहीं मेजर कर रहे हैं. तो छोटा सा एरिया ले रहे हैं, उसमें कितना फ्लक्स जा रहा है. अगर वो छोटा शाई है तो एरिया के साथ डिवाइड करने के डेंसिटी मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर ये एरिया पता चलता है तो वो एरिया को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पूरा फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है हर जगह पे, हर जगह डेंसिटी सेम है. ठीक है, तुम लोग बचपन में पढ़े हो कि अगर कोई भी एयर ले लो कहीं से भी, ये तुम अगर एयर का सैंपल ले लो, उसमें 20% ऑक्सीजन रहेगा कहीं भी. हाँ, अगर ऐसा नहीं कि पॉल्यूटेड एरिया में ले लिया, ठीक है, जहाँ पर फ्रेश एयर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ले लो तो 1 किलोमीटर दूर से वहाँ पर भी एक तुमने एयर ले लिया, उसमें भी देखोगे 1/5 ऑक्सीजन है. तो डेंसिटी इज इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हाँ, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है, लिटिल बिट, बट ओवरऑल डेंसिटी रिमेन्स सेम. Okay, so that was the equation. So this expression of the flux per unit area, since 4 pi r square is surface area of the imaginary sphere of radius r, this is the flux passing through the per unit area at a distance r from the center of charge. This is called the flux density at the set point. That means जो अभी हमने देखा कि स्पीयर था, तो स्पीयर से वो एक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, सॉरी चार्ज जो है, चार्ज से फ्लक्स आ रहा है, तो हम लोगों ने एक रेडियस ड्रॉ किया, तो रेडियस लेके आर लेके एक स्पीयर ड्रॉ किया था, तो उसका फ्लक्स मिला था हमको छोटा शाई, तो डिवाइड करने से एरिया के साथ हमको डेंसिटी मिल गया. ठीक है, तो देयरफॉर D is equals to epsilon naught epsilon r E that we have already seen now.
Okay, so from the above equation, it is clear that the electric field intensity and the electric flux density are in the same phasor. That means इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैपिटल ई है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो डी है वो सेम फेजर में है. फेजर क्यों? फेजर मतलब सेम डिरेक्शन में है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर. ओके, सो दे विल बी सिमिलर, that means in the same direction, because flux density is also dependent upon the electric field intensity. More is the electric field intensity, more is the flux density. As the number of lines of force emanated from the charged body is equals to the quantity of charge of the body measured in coulomb, that means Q equals to psi, we can also define the electric flux density at any point in electric field intensity as a number of lines of force passing through the unit area at that point. That means electric field density at any point in electric field is measured the number of lines of force. So basically we can also measure that D is also psi if the area is a unit area. Okay, so that means we can define in this way that if psi is equals to flux density and D is psi is equals to flux and D is the flux density, then we can integrate D with respect to area to get psi. ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी के साथ हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फ्लक्स मिलेगा. तो एरिया को मल्टीप्लाई करने को अगर नहीं कर रहे तो फिर एरिया, टोटल एरिया को कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने कहा था कि फिजिक्स में हम लोग बड़ा जो एरिया होता है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, फिर टोटल एरिया जो होता है वो इंटीग्रेट करते हैं पूरा पूरा. तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर टोटल एरिया निकल जाएगा, फिर उसके साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग फ्लक्स मिल जाएगा. ठीक है, इन एसआई यूनिट one line of electric flux emanates 1 plus 1 coulomb and it terminates minus 1 coulomb. मतलब के one line of electric flux मतलब कि एक अगर line of electric flux है तो वो 1 coulomb, 1 coulomb is emanating, that is it emanates from 1 coulomb and terminates on minus 1 coulomb. मतलब के जैसे कहा था कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज. सो दिस चार्ज विल हैव द लाइन्स ऑफ फ्लक्स लाइक दिस कमिंग आउट. सो इट विल नॉट एंड until and unless there is another charge which is of the same magnitude but opposite polarity, that is minus Q. So in that case what will happen? The flux will come out and end over here. All the other fluxes will keep moving, but this flux will end over here. So all the fluxes which are coming out will end over here. If they are equal, then all the fluxes will end over here. अगर इक्वल नहीं है, मान लो कि एक बड़ा क्यूब है, एक छोटा क्यूब है, तो सारा का सारा फ्लक्स उसमें नहीं जाएगा, कुछ फ्लक्स बाहर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्स उसके अंदर टर्मिनेट होगा. लेकिन अगर दोनों ही सिमिलर है, एक ही चार्ज है, तो फिर पूरा का पूरा फ्लक्स ही उसमें समा जाएगा, इट विल गेट टर्मिनेटेड. जैसे कि एक मैग्नेट में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बिकॉज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ नॉर्थ पोल इज इक्वल टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ साउथ पोल इन द सेम मैग्नेट. दैट इज व्हाई द फ्लक्सेस आर इन क्लोज्ड लूप. Similarly, if you take a charge, single charge, then it will not create a closed loop of flux. The fluxes will spread out. But if you take a charge of the same magnitude but opposite sign, opposite polarity, then the fluxes will terminate in that particular negative charge. So that means the electric flux, one line of flux starts from 1 coulomb and it terminates in minus 1 coulomb. Okay. Therefore, the electric flux is measured in coulomb. Hence, the vector field D is called the electric flux density and is measured in coulombs per meter square. For historical reason, electric flux density is also called the electric displacement. Okay. Now we will move on to Gauss law. Gauss law is a very important law, where often from Gauss law also Coulomb's law can be defined. Okay,
So Gauss law states that the total flux through any closed body, closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface. तो हमने जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कशन शुरू किया था ये जानकर कि एक चार्ज होता है, अगर Q उसका वैल्यू है तो वो जो फ्लक्स उसके वहाँ से निकलेगा शाई, तो शाई का वैल्यू भी Q के साथ सेम होगा, इट विल बी इक्वल होगा। लेकिन ये आया कहाँ से? आया गॉस लॉ से। सो गॉस एक्चुअली डिफाइंड दैट, he actually stated the total flux through a closed surface, that means there is a closed surface, inside the closed surface if you put some charge, okay, in the closed surface you put some charge, then the fluxes will come out of the closed surface, okay, because the boundary of the flux is more and the surface which you are taking, this red line, red sphere, is small. Suppose the total boundary of the charge is, suppose the same thing, the entire screen, okay, of my computer, but the sphere which I am drawing is a small sphere, so obviously all the fluxes will come out. The total fluxes which are coming out, that means the total flux through a closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface. मतलब जितना भी फ्लक्स निकल रहा है उस चार्ज के वजह से उस एरिया में से वो इक्वल होगा चार्ज के साथ, ठीक है। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वन। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्मॉल फ्लक्स, सो दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ओके। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम पूरा एरिया को छोटा छोटा हिस्सा में बांटते हैं, मान लो कि ये छोटा स्पीयर बांटते हैं, तो इस स्पीयर में से कितना फ्लक्स जाएगा? डी शाई, इसमें से डी शाई, क्यों? क्योंकि इसका एरिया है ds, इसका एरिया है ds, तो पूरा एरिया क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, ओके, s, और पूरा फ्लक्स क्या होगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी शाई, छोटा छोटा करके। That means the total flux is nothing but the closed surface integral of flux density, okay. Now we know that charge अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि ये जो चीज हमने पहले जो पढ़ा था, ये जो चीज चार्ज इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लो कि एक चार्ज है, एक वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, तो टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम होगा अगर V है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें? Q बाई V। मतलब कि सॉरी, एक वॉल्यूम अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, तो वॉल्यूम में पूरा का पूरा चार्ज उसमें बैठ रहा है, Am I audible? Yes, sir. Okay. So if there is a volume, okay, if there is a volume and there is a lot of charge inside the volume, then the total charge is Q. So what is the charge per volume? That is the volume charge density that we have studied. So similarly, if I take the case where the charge which is there, जो Q चार्ज है, तो मान लो कि Q जो चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लो कि एक वॉल्यूम चार्ज है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम में पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है Q, और वो जो वॉल्यूम वो हमने एक स्पीयर के अंदर रखा है और स्पीयर से वो फ्लक्स निकल रहा है शाई। अब शाई तो चार्ज के साथ इक्वल होगा, लेकिन जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम हमने रखा है, वॉल्यूम में तो चार्ज हो गया, सो चार्ज इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इज अ वॉल्यूम चार्ज, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q, सो द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is rho v, volume charge density,
तो मतलब चार्ज को अगर हम मान लो कि हमको चार्ज का वैल्यू नहीं पता, हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, रो का वैल्यू पता है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे? जो वॉल्यूम है उसके साथ अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते या फिर उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल बनाते हैं, एक ही बात है, ये वी होगा, रो वी, ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक ही बात है। दैट इज वाई क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो वी, वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी। तो अब इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? इक्वेशन लिख सकते हैं कि psi is equals to q, okay, now psi is equals to q, so that means psi is also equals to closed surface integral of d, that means यहां पर देखो psi जो है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ d है और q जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी dv है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा, ओके। बाय अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, अब डाइवर्जेंस थ्योरम तो आपको अगर याद होगा, उसमें क्या देखे थे हम लोग कि एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, ये था डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या था? स्टोक्स थ्योरम में अ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू द कर्ल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर, ये था स्टोक्स थ्योरम, ओके। वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन था डाइवर्जेंस थ्योरम में। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो पहला जो पार्ट है ना Q इक्वल्स टू ये जो पार्ट है D, सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ D, इसको हम इसके ऊपर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, बिकॉज द डाइवर्जेंस थ्योरम हेल्प्स अस टू चेंज द सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, सो इट विल बी चेंज टू वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस ऑफ D हो जाएगा। अब क्या सुविधा क्या हो रहा है हमको, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था ये वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल था और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल था, नाउ बोथ हैव बिकम वॉल्यूम इंटीग्रल, सो वी कैन इक्वेट देम। सो जो रिलेशन था यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी dv। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, ये आएगा रो वी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ D। So this is our conclusion that the volume charge density is the same as the divergence of the electric flux density. ये conclusion है। This is the first Maxwell's equation. Now we are introducing towards Maxwell's equation. Maxwell's equations are the equations which are related to the electric field and magnetic field. There are major 4 Maxwell's equations, both in differential form and integral form. Okay, so this is the differential form of the first Maxwell's equation, which is nothing but the volume charge density is equal to the divergence of the electric flux density. Okay, so numerical जो है वो हम next class में discuss करेंगे. First tell me, did you understand this particular derivation that Gauss law stated that psi is equals to q? Now psi is equals to closed surface integral of d, ये हमको पता है, और चार्ज को हम वॉल्यूम के अंदर डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगा। तो अगर q ये है तो q के साथ इक्वेट करके हमको ये लिख सकते हैं। अब एक सरफेस इंटीग्रल है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, so that both becomes volume integral, so then we can equate that rho v is equals to divergence of d. Okay, I think this must be clear to you. If you have any question, you can ask. Do you have any question? सर जो 12th में हम लोग फ्लक्स पढ़े थे और अभी जो फ्लक्स पढ़ रहे दोनों अलग है ना सर? बहुत
12 में फ्लक्स पढ़े, तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे? ये सब पढ़े थे फ्लक्स। हाँ, तो उस टाइम उसमें फाइ लिखते थे। वो एक ही बात है, फाई लिखो शाई लिखो, फाई जनरली हम लोग अभी नहीं लिख रहे कि वो तो अलग का हुआ, वो एक डिनोशन हुआ है ना, वो रिप्रेजेंटेशन हुआ। फाई में, हाँ फाई में तुम क्या फाई क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, दैट मीन्स दी any electrical circuit has both electric field and magnetic field, both properties there. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग फाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लक्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, इसलिए अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो फिर दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या था कि गॉस लॉ जो था, गॉस लॉ अगर तुम पढ़े हो क्लास 11 और 12 में, गॉस लॉ विल नॉट चेंज। गॉस लॉ का स्टेटमेंट यही है कि एक अगर चार्ज को हम लोग किसी बंद कमरे में रख रहे हैं या बंद डिब्बे में रख रहे हैं, तो फ्लक्स जो निकलेगा चार्ज से, वो जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो चार्ज के साथ सेम होगा। दैट इज द टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस is equals to the charge itself. The flux will be equals to the charge itself. Okay, now since we are studying the field theory, we are studying the vector analysis, vector calculus, that is why we are representing in terms of divergence, because electric field intensity is a vector. Why? Because force due to Coulomb's law, the F equals to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square, ये force जो था that was a vector. Electric field intensity is a vector. If electric field intensity is a vector, then we have seen that the flux density is coming from the electric field intensity. So flux density will also be a vector, because flux density is nothing but the permittivity constant multiplied by electric field intensity. Now if flux density is constant, is a vector. Now flux is a vector or not, that is not important, because it is a scalar quantity. Okay, because charge is scalar, but flux density is vector. So if flux density is vector, then we can apply this divergence theorem. So obviously you will get some improvement in the you can say the discussion which you had in your school level, or the subject you have studied in your school level, the basic physics. Those concepts will be there, but this is the advanced version, the applied version. Okay, this is applicable for both BSc courses and for electrical engineering and electronics engineering also, because this electromagnetic field theory is a very important subject. Okay, okay, any more questions? और कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आई विल एंड दिस लेक्चर नाउ, ओके, एंड आई विल शेयर द नोट्स विथ यू इन द गूगल क्लासरूम, ओके, दिस पर्टिकुलर today's notes, because up to the last lecture I have means updated that notes in the Google Classroom, so you can go through the Google Classroom. If you join, then you can see that all the previous notes have been updated. Okay, so I will update this one also later. Okay, so if you don't have any further question, then you may leave then. Thank you all students.